ये वीडियो कमेंट अपॉन फॉलोइंग स्पॉट्स, इसमें मैंने खास चीज़ों को लिया है। कुछ एम्ब्रियोलॉजी से लिया है, कुछ बोन से लिया है, कुछ हिस्टोलॉजी से लिया है। और ये बीएससी पार्ट 2 सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, ब्लास्टुला फ्रॉग। तो कैसे आइडेंटिफिकेशन आप करेंगे? At the end of cleavage, the solid ball of cells give rise to a blastula. Blastula consists of number of blastomeres. The smaller blastomere is called micromeres and larger one is called megameres. The smaller one is called micromeres and the larger one is called megameres. Megameres. The presence of a well-defined blastocele. Blastocele. This is the characteristic feature of blastula stage. This is the characteristic feature of blastula stage. Characteristic feature of blastula stage. Formation of blastocele is beginning of primary body cavity. The blastula of frog is called amphiblastian, amphiblastula larva or amphiblastula, because blastocele is confined to only animal pole. Confined to only animal pole, ये एक डायग्नोस्टिक फीचर है, इसीलिए इसको एम्फीब्लास्टियन कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? एम्फीब्लास्टियन कहते हैं। Blastocele is also called segmentation cavity. It's also called the floor of blastocele is composed of layer of yolk laden megameres, while the roof is composed of micromeres. यानी फ्लोर जो होता है वो मेगामेयर से होता है और रूफ माइक्रोमेयर से होता है। The process of formation of blastula is called blastulation. The process of formation of blastula is called blastulation. In this stage, early presumptive areas can be differentiated by staining technique. And a small area near vegetal pole is presumptive notochord. इस presumptive यानी जिससे notochord बनता है, जिससे क्या बनता है? notochord बनता है. Close to presumptive notochord, there is a gray crescent region which is the presumptive mesoderm. Gray crescent region which is the presumptive mesoderm. Presumptive mesoderm. The remaining vegetal region is presumptive endoderm. ये डायग्राम है, ये ब्लास्टुला सेल है, ये सब ब्लास्टोमियर्स है। अब ये ब्लास्टोमियर साइज के हिसाब से 2 टाइप में है। ये इधर वाला छोटा ब्लास्टोमियर है और इधर वाला ब्लास्ट बड़ा है। इसको हम मेगामियर्स कहते हैं, इसको माइक्रोमियर्स कहते हैं। और लेट स्टेज में ये एक कैविटी बन गई, इसी कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं। ब्लास्टुला का ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। और ये जो रूफ है ये आपका एक्टोडर्म से बना हुआ है और मैक्रोमियर से है, और ये जो फ्लोर है ये मेगामियर से है। चिक ब्लास्टुला ये ब्लास्टोसील दिखा रहा है, ये अर्ली स्टेज में है। लेटर स्टेज में ब्लास्टोसील है। चिक ब्लास्टुला इज नोन एज डिस्को ब्लास्टुला। डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें यॉक होता है एक साइड में। डिस्को ब्लास्टुला कंसिस्ट ऑफ disc shaped mass of blastomeres overlying a large yolk mass. इसके ऊपर देखिए यहाँ पर यॉक था, इसके ऊपर एक डिस्क शेप था, अभी स्ट्रक्चर जो मैंने दिखाया था। ये यॉक है, इस यॉक पे ये देखिए डिस्क शेप्ड है या ये डिस्क शेप्ड है, ये इसीलिए इसको डिस्कोब्लास्टुला कहते हैं।
This blastula is the result of meroblastic discoidal cleavage, क्योंकि इसमें यौग बहुत ज्यादा होता है तो इसलिए ये मेरोब्लास्टिक होता है. There is no blastocele, instead a slit-like cavity called subgerminal cavity appears in between the blastoderm and the yolk mass. Subgerminal cavity. Subgerminal cavity. Frog gastrula. First part of gastrulation is the formation of a blastopore. Blastopore क्या है? Future anus है. Future anus है. यानी ब्लास्टोपोर से ही एनस बनता है. The start of gastrulation is marked by the pushing inward, जिसको invagination कहते हैं, of cells in the region of embryo once occupied by the middle of the gray crescent. Of the gray crescent. Further folding of the blastopore results in a cavity called the archenteron. ये archenteron future gut है, यानी digestive system है. archenteron future gut है, यानी जब further blastopore मुड़ता है तो ये बनता है. blastocele is being displaced, इसलिए displace होता है कि continued morphogenetic movement जो होता है, morphogenic movements results in enlarging the archenteron, यानी archenteron बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से ब्लास्टोसील रिड्यूस होने लगता है और साथ ही साथ एक यॉक प्लग जो है ब्लास्टोपोर पे यानी ढक्कन टाइप का लग जाता है. इन मैच्योर फ्रॉग गैस्ट्रुला 3 लेयर्स बनता है, जिसमें आउटर लेयर को एक्टोडर्म कहते हैं, इनर लेयर को इंडोडर्म कहते हैं, जो कि आर्केंटेरॉन को लाइन करता है, एंड मेजोडर्म इन बिटवीन एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, ये आपको बताया गया है. देखिए ये जो है ये सेल्स जो है ऑर्गेनाइजिंग सेल्स है, जिसका नाम दिया है इसके डिस्कवरर के नाम पर, स्पर्मैन ऑर्गेनाइजर अर्ली गैस्ट्रुला. ये जो सेल्स है इन इम्बोली हुआ यानी इनवेजिनेशन हुआ, ये इनवेजिनेशन की वजह से ये इस तरह से 2 लेयर बन रहा है. यहाँ पर लेट में ज्यादा क्लियर है, ये आउटर एक्टोडर्म है, ये बीच का मेजोडर्म है और ये लेयर जो है ये एंडोडर्म है. एटलस वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉग. एटलस वर्टिब्रा ऑफ frog. The atlas vertebra is the first vertebra of the vertebral column. फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस वर्टिब्रा करते हैं और ये एक बोनी रिंग टाइप है. बोनी रिंग टाइप है ये क्या है? बोनी रिंग टाइप है और ये फर्स्ट वर्टिब्रा है. The centrum and neural spines are reduced. The transverse process and pre-zygapophysis are absent. Anteriorly, the centrum has a pair of large concave facets, जिसकी वजह से ये to articulate proximally with the occipital condyles of the skull, यानी स्कल को ये अटैच करता है. Post zygapophysis and are absent. ये डायग्राम है एटलस वर्टिब्रा का. ये देखिए ये सब हॉर्न है. ये डायग्राम है टॉप व्यू, बॉटम व्यू. ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. ये इसी को कहते हैं एटलस वर्टिब्रा. यूरो स्टाइल ऑफ फ्रॉग. The Euro style is the posterior unsegmented part of the vertebral column representing the fusion of the caudal vertebrae. ये जो बनता है caudal vertebrae के fusion की वजह से बनता है और this is the characteristic feature of frog. टोटल लेंथ ऑफ वर्टिब्रल कॉलम ऑफ फ्रॉग, ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम का आधा होता है. द यूरो स्टाइल इज समवॉट ट्रायंगुलर इन आउटलाइन विद ए पॉइंटेड एपेक्स डायरेक्टेड बैकवर्ड्स. इट्स सेंट्रम इज रॉड लाइक with a broad anterior face bearing 2 concavities for articulating proximally with the distal end of the 9th vertebra. यानी इससे 9th vertebra attach रहता है. The dorsal surface of the Euro style is raised up in the form of a vertical ridge.
which gradually tapers posteriorly, जो पीछे की तरफ जा करके pointed हो जाता है. The anterior side of the ridges of the urostyle contains a short, narrow neural canal which encloses the terminal part of spinal cord. ये है, ये रीज है, ये रीज दिखाई दे रहा है आपको, ये सेंट्रम दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये वर्टिब्रा है और ये फैसिट है जिसमें 9th वर्टिब्रा आकर के अटैच होता है. ये यूरोस्टाइल का डायग्राम है. Pectoral girdle of frog. The pectoral girdle protects the inner, softer parts of the chest region as there are no ribs. The pectoral girdle also provides support and attachment to the forelimb bones and muscles. The pectoral girdle is formed of both bones and cartilage. The two similar halves of the pectoral girdle are united mid-ventrally with the sternum but are separated dorsally. यानी dorsal side में separated होता है, ventral side में fused होता है. Each half is made up of 4 bones: suprascapula, scapula, coracoid, and clavicles. Suprascapula is a broad, flat, almost rectangular bone in which the calcified cartilage is absent from its upper margin. Scapula is a stout, flat bone which is broader towards tail end and is constricted in the middle. Posteriorly, the scapula forms the upper half of the glenoid cavity. The head of the humerus of the forelimbs articulates with the glenoid cavity of the pectoral girdle. The clavicles and coracoids of both sides unite with each other mid-ventrally and with sternum through a cartilaginous strip called epicoracoid. The clavicle pelvic girdle of frog. The frog pelvic girdle is a V-shaped structure. It is composed of two similar halves. The pelvic girdle provides support to the pelvic region and the hind limbs. Each half of the pelvic girdle is called as os innominatum and is composed of 3 bones: ilium, ischium, pubis, IIP. The long ilium meets with the transverse processes of the 9th vertebra. The two ilia meet posteriorly at an iliac symphysis. The two ilia bear a prominent dorsal vertical ridge called the iliac crest. The pubis is much reduced. It is a rectangular piece of calcified cartilage which forms the central disc of the pelvic girdle and a small part of the acetabulum cavity in which the head of the femur of the hind limb is lodged. Both pubic bones are completely fused together. The two ischia are larger and slightly central oval bones. ये डायग्राम है, ये इलियम है और ये इस्चियम है. ये इस्चियम है, ये बोन इस्चियम है, ये प्यूबिस है और ये इलियम है. बीच में ये एसिटाबुलम है, इसी में रहता है. Femur of fowl. Femur is the bone of thigh of hind limb. It is short and powerful bone flattened at both the ends. Proximally on the inner side, it bears a rounded head which fits into acetabulum. On the outer side of the head is an irregular prominent
processes the greater trochanter. Between the great trochanter and head is the articular surface for the artitrochanter of ileum. Distally, it has a deep groove or intercondylar fossa, bounded intercondylar fossa. Outer condyle receives the end of upper end of fibula. The upper end of fibula. ये डायग्राम है, ये हेड है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये पोस्टीरियर व्यू है, एंटीरियर व्यू है. ये pelvic girdle of fowl. The pelvic girdle consists of two separate halves lying on either side of the synsacrum. Synsacrum. ये important point है. Each half is known as os innominatum, जैसे पहले कहा. Each os innominatum is composed of ilium, ischium and pubis. ये तीनों बोन सब जगह होगा. At the junction of three bones is present a concavity acetabulum. ये भी मैंने कहा, जिसमें कि head of the femur fix रहता है, articulation of femur. Ilium is an elongated, remarkably expanded bone. And ischium is also dorso-ventrally flattened bone projecting backwards behind the acetabulum. Behind the acetabulum. Pubis is a long, thin, curved, slender bone directed backwards parallel to the ventral margin of ischium, with which it is usually fixed. ये है आपका पर ये फाउल पेल्विक गर्डल, ये ischium है, ये pubis है, और ये इलियको फोरामेन है, और ये इस तरह से फ्यूज्ड है थ्री बोन्स. Hyoid of rabbit. The hyoid is bony in rabbit and consists of a small, stout, thick body called basihyal. Basihyal placed transversely between the two halves of the mandible, and bears two pairs of horns. The smaller anterior ceratohyals are situated below the tongue and consist of a series of small bones such as ceratohyal, epihyal, stylohyal, and tympanohyal. The last one is fused with the tympanic and preaortic bones. The long and posterior corona consist of this. Pectoral girdle of rabbit. ये भी तीन बोन से है. It consists of two separate halves placed dorsal to the anterior thoracic ribs in between the forelimbs. It supports forelimbs and protects the soft parts of the body from the ventral side. Each half of the pectoral girdle is known as innominate. पहले ही बता चुका हूँ. One half of the pectoral girdle is formed of a broad, more or less triangular bony plate called scapulocoracoid and a small clavicle bone. Clavicle is a thin, slightly curved bone extending between acromion process and manubrium of the sternum. ये
आपका पेक्टोरल गर्डिल है, ये इस तरह से है। अब एक स्लाइड मैंने एक बनाया है थायराइड, जिसका कि आपको हिस्टोलॉजी देखना है। Thyroid gland is a bilobed endocrine gland. It is unique in its stores its hormones bound to an extracellular pool of protein colloid called stroma. Capsule enclosed by a thin layer of connective tissue, trabeculae. Connective tissue extends inwards from the capsule to partially outline irregular lobes and lobules. Next part is parenchyma. It is secretory in function. Next part is thyroid follicles. It is a spherical follicles of varying size 50 to 5500 micron meter in which thyroid hormones are stored. The next part is colloid. Lumen of each follicle is filled with the gel-like mass called colloid. It is mostly the protein thyroglobulin, pink and bound thyrohormones, triiodothyronine and tetraiodothyronine or thyroxine. The ciliary space around the colloid is a shrinkage artifact. Follicular cells. Follicles are lined by a simple cuboidal to columnar epithelium depending on functional activity, secrete thyroid hormone when active. And the next part is capillaries, rich network. Next part is parafollicular cells, small numbers of larger cells, and this is the last. I wish you all the best, and you have to write, not write all the points, but some few important points from these topics if it is asked in your exam. Thank you.